dear students. Welcome to Law Learners 365. I hope you all are doing really well and studying really hard. आज मैं लाई हूँ आपके लिए प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉस ऑन दिस टॉपिक, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा. चलिए, विदाउट फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट मी शेयर माय स्क्रीन. ओके, जो पहला केस लॉ है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है दौलत राम वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा. एक सुप्रीम कोर्ट का केस है 1972 का. In this case, it was held that the aim of this section was to protect the youth. The juvenile offenders would not be sent to jail if their crime was not as serious as to punish them with life imprisonment or death. So, इस केस में डिस्कस किया गया था कि जो एम है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का, उसमें जो मेन फोकस होता है वो होता है रिहैबिलिटेशन. इस केस में बोल रहा है कि दिस एक्ट का एम है टू प्रोटेक्ट द यूथफुल ऑफेंडर्स, जुवेनाइल ऑफेंडर्स. अगर कोई जुवेनाइल ऑफेंडर्स जो कि कोई सीरियस ऑफेंस जिसका पनिशमेंट डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, उसके लिए अक्यूज ना हो, तो उसको हम जेल में ना भेज के ऑल्टरनेटिवली प्रोबेशन में डाल सकते हैं. ठीक है, तो इस केस में जुवेनाइल ऑफेंडर्स के बारे में हम बात कर रहे थे. नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट केस, दैट इज मसरुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु. इस केस में क्या हुआ था? इस केस में एक अक्यूज पर्सन को अंडर सेक्शन 397 ऑफ आईपीसी में 7 साल का सजा सुनाया गया था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया? दैट द ट्रायल कोर्ट assessed the convict age wrongfully and there was no examination of the convict between the grant of probation under the act and the statutory minimum sentence of 7 years. Thus, the appellant were allowed the benefit of Section 4 and Section 6 of the Probation of Offenders Act, even when charged under Section 452 and 379 of the Indian Penal Code. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो कन्विक्ट है, जो अक्यूज पर्सन है, ट्रायल कोर्ट ने ड्यूरिंग ट्रायल उसका जो एज है वो रॉन्गफुली असेस किया था और उसका कोई एग्जामिनेशन भी नहीं हुआ था सजा डिक्लेयर होने से पहले. इसलिए दो द अक्यूज्ड वाज चार्ज्ड विद सीरियस ऑफेंसेस लाइक Section 452 and Section 379 of the Indian Penal Code, still he was granted benefit under Section 4 and Section 6 of the Probation of Offenders Act. Next जो हम लोगों का केस है वो है रामामूर्ति वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका. इस केस में क्या हुआ था? The Supreme Court observed that it really resulted in suspension of sentence as the person released on probation is required to execute a bond under the provision of the Probation of Offenders Act 1958, requiring maintenance of the good conduct during the probationary period, and failure to do so finds the person concerned in prison again. It must be stated that while disposing of the offender on probation, the judges are confronted with the crucial task of striking a balance between the protection of the society on the one hand and the correction of the offender on the other. The magistrate cannot afford to dispose of the convict without taking into consideration the nature and gravity of the offense and potentialities for reformation of the criminal. सो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, इस एक्ट का मोटिव क्या है, इसके ऊपर डिस्कस किया था. सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स का रिजल्ट होता है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस. अगर किसी पर्सन ने किसी भी अक्यूज पर्सन को प्रोबेशन में डाला जाता है तो उसको रिलीज तभी किया जाएगा अगर वो एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करे. और
अगर वो प्रोबेशन के दौरान गुड कंडक्ट मेंटेन करता है अपना, फिर तो वो उसको छुटकारा दिया जा सकता है। लेकिन अगर वो उसका उसका ऊपर कोई इम्प्रूवमेंट ना हो, उसमें कोई चेंजेस ना शो हो, तो वो फिर से कस्टडी में लाया जा सकता है। और जब किसी भी ऑफेंडर को प्रोबेशन में डालना हो तो कोर्ट के ऊपर एडिशनल बर्डन रहता है कि कोर्ट को बहुत ही केयरफुल होना पड़ेगा। किसके ऊपर? कि अगर उसका इंसान सोसाइटी के लिए थ्रेट ना हो, court should maintain a balance between protection of the society and correction of the offender. On the one hand, the court should ensure that the society is protected while releasing an offender on probation, or while putting an offender on probation. The society is not subject to a threat. And on the other hand, the court must make sure that the person to whom probation is granted, he is capable of reformation. उसके अंदर चेंजेस लाया जा सकता है, उसके ऊपर अंदर करेक्शन लाया जा सकता है। इसके इसी ऑब्जेक्ट के लिए उसको जेल में ना डालते हुए उसको प्रोबेशन में एक अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है, जिससे उसके अंदर रिफॉर्म लाया जा सके। ठीक है। नेक्स्ट केस इज पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्सेस एनएस स्क्रीमूर्ति, 1973। अभी इसी केस में क्या हुआ था, जस्ट सेकेंड। इस केस में अक्यूज्ड क्या हुआ था, अक्यूज्ड के ऊपर अपने खुद का बीवी का मर्डर का चार्जेस था। द अक्यूज्ड वाज ट्राइड फॉर कमिटिंग मर्डर ऑफ हिज वाइफ, बट ही वाज कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 323 of the IPC as the injury caused by him was simple in nature. उसके ऊपर उसका वाइफ का मर्डर का चार्जेस था, लेकिन उसने सेक्शन 323 के अंदर सिर्फ सिंपली हर्ट किया था, इसलिए उसके ऊपर जो चार्जेस था वो सिंपल हर्ट का था। He was released on probation by the trial court, but the High Court sentenced him to 6 months rigorous imprisonment. It was held that the conduct of the accused immediately after the occurrence as well as the trial was one of the relevant and material factors to be taken into account before exercising power under Section 4, Subsection 1 of the Prohibition of Offenders Act, 1958. In regard to the conduct of accused, the court made the following observation. In the present case, the accused did not admit his guilt at any stage. The conduct of the accused is not that of man of a good character. Admittedly, he ran away after the incident. He was kept in custody of prosecution witness 3 and was handed over to police on the same day, on the day following the date of offense. At the request, he never repented for what had happened to his wife either. So, इस केस में क्या हुआ था, एक अक्यूज पर्सन जिसके ऊपर अपने खुद का बीवी का मर्डर का चार्जेस था, वो सिर्फ उसका गिल्ट प्रूफ हुआ अंडर सेक्शन 323 ऑफ आईपीसी फॉर सिंपल हर्ट। लेकिन उसको जब ट्रायल कोर्ट ने प्रोबिशन दिया, लेकिन हाई कोर्ट ने उसको 6 मंथ्स का इम्प्रिजनमेंट अवार्ड किया, रिगोरस इम्प्रिजनमेंट। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट ने जब कंसिडर किया कि ये जो इंसान है, ही इज नॉट अ गुड कैरेक्टर, उसके अंदर कोई रिपेंट नहीं है, कोई गिल्ट नहीं है। इट इज प्रूफ दैट जो अपने बीवी को हर्ट करने के बाद में वो वहां से भाग गया था और प्रोसिक्यूशन विटनेस के घर छुपा हुआ था, तो इसी वजह से इस आदमी इज नॉट अ फिट पर्सन टू पुट ऑन प्रोबिशन, और उसने उस जजमेंट को हाईकोर्ट ने रिवर्स करके उसको 6 मंथ्स रिगोरस इम्प्रिजनमेंट अवार्ड किया था। तो इससे हम और एक चीज हम क्लियर कर सकते हैं कि प्रोबेशन किसी भी ऑफेंडर को अलाउ करने से पहले उसका नेचर, उसका कंडक्ट वो कंसिडर करना बहुत ही जरूरी है, राइट। नेक्स्ट इज केस नंबर 5,
श्रीमती देवकी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इन दिस केस ये क्या बोला गया था? It was observed that Section 4 would not be extended to the abominable culprit who was found guilty of abducting a teenage girl and forcing her to sexual submission with a commercial motive. इस केस में क्या बोला गया था? एक abominable, एक abominable culprit मतलब एक बहुत ही सीरियस कल्प्रिट जिसने कोई एक टीनेज गर्ल को एब्डक्ट किया था और उसको फोर्सफुली सेक्सुअल सबमिशन करने के लिए मजबूर कर रहा था, उसको प्रोबेशन का बेनिफिट नहीं मिल सकती। ओके, नेक्स्ट इज कमोरनीसा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में क्या हुआ था? The accused was charged with the offense of theft. उसने कुछ गोल्ड सोना चोरी किया था। ओके, she was punished by rigorous imprisonment. Now, at the time she committed the offense, she was under 21 years of age. Thus, the probation officer requested that the court should grant her release on probation under Section 3 and 4 of the Probation of Offenders Act. But the court refused and held that the appellant had been engaging in various crimes before and was arrested prior. Matlab, this particular case deals with habitual offender. Though in this particular case, the accused person was a girl who was below the age of 21 years, and on that ground, probation was asked, but the court refused to grant that on the ground that she was a habitual offender. She had committed various offense previously and convicted for that. So probation cannot be allowed to her. Okay. Next case is Dalbir Singh versus State of Haryana. In this case, the court took the opinion that it is appropriate for the defendant to be placed on probation for his good conduct, given that the facts of the situation are needed to be taken into account. One of the circumstances informing the aforementioned opinion, which cannot be omitted, is the essence of the offense. Thus, Section 4 can be redressed where the court recognizes the circumstances of the situation, in particular the character of the crime, when the court decides whether it is reasonable and necessary for the execution of a defined person that the defendant should be released on the grounds of good conduct. इस केस में क्या गाइडलाइन दिया गया था? कोर्ट किसी भी अक्यूज को प्रोबेशन ग्रांट करने से पहले उस क्रिमिनल का नेचर के साथ साथ वो जो क्राइम किया है उसका एसेंस, उसका सीरियसनेस कंसीडर करेगा। उसके साथ साथ जो सर्कमस्टांसेस में वो क्राइम कमिट किया गया था उसका भी सीरियसनेस कोर्ट कंसीडर करेगा। और अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ ये जो अक्यूज पर्सन है वो किसी भी कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस में मजबूर होके कोई क्राइम कमिट किया है और वो क्राइम भी कुछ सीरियस नहीं है, फिर और उसके अंदर वो क्रिमिनल के अंदर रिफॉर्म होने का चांसेस है, then only court will allow that particular accused person on probation. Moving on to case number 8, that is Musa Khan versus State of Maharashtra. In this case, the Honorable Supreme Court propounded that the Probation of Offenders Act is a social legislation which is meant to reform juvenile offenders so as to prevent them from becoming hardened criminals by providing an educative and reformative treatment to them by the government. ये जो Probation of Offenders Act है वो एक social legislation है जिसका एक ऑब्जेक्ट है कि जुवेनाइल ऑफेंडर्स को हार्डकोर क्रिमिनल बनने से रोकना।
वो कैसे हम कर सकते हैं? जुवेनाइल ऑफेंडर्स को हमें हार्डकोर क्रिमिनल से सेपरेट रखना होगा और उन लोगों को वेरियस ट्रेनिंग, वेरियस एजुकेशन, रिफॉर्मेटिव ट्रीटमेंट हम लोगों को, गवर्नमेंट को उसको देना पड़ेगा, तभी एक जुवेनाइल ऑफेंडर्स के अंदर रिफॉर्म्स लाया जा सकता है. ओके, नेक्स्ट इज मूविंग ऑन टू अजहर अली वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. In this case, what happened? Benefit of Provision of Offenders Act 1958 cannot be extended to convict aged about 16 years at the time of commission of offences found guilty of outraging the modesty of woman under section 354 of IPC, considering heinous crime that he had committed and social condition prevailing in society. हमने निर्भया केस ऑलरेडी देखा है, राइट? तो इसी तरह इस पर्टिकुलर केस में एक जो ऑफेंडर जिसका एज 16 इयर्स से भी कम था, ही वाज अक्यूज्ड ऑफ आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, और कोर्ट ने इसे बहुत ही एक सीरियस ऑफेंस कंसिडर किया. और ऑफेंडर हालांकि वो माइनर है, बिलो द एज है, लेकिन कीपिंग इन माइंड द प्रिवेलिंग सोशल कंडीशन, कोर्ट ने उसे प्रोबेशन में डालने से मना कर दिया, राइट? नेक्स्ट केस इज कमांडेंट 20th Battalion वर्सेस ITB पुलिस वर्सेस संजय बिंजोला 2001. Nobody can claim the benefit of section 3 and 4 of the act as a matter of right. It is the court which has to pass appropriate orders in the facts and circumstances of the case and having regard to the relevant factors. So, Prohibition of Offenders Act 1958 is a social legislation, right? तो ये जो एक्ट वो कोर्ट के ऊपर डिस्क्रिशनरी पावर देता है कि कोर्ट डिसाइड करेगा कि किसको प्रोविजन में डालना है, किसको नहीं, किस किस ऑफेंडर्स में रिफॉर्म लाया जा सकता है, किस किस में नहीं. So, the benefit of this act cannot be claimed as a matter of right. कोई भी कोर्ट में जाके दावा नहीं कर सकता कि मुझे प्रोविजन में डाल दो, मुझे रिलीज रख लो. It depends upon the discretion of the judge, discretion of the court, who will consider the various facts and circumstances of the case, and after that, court will decide whether to allow the offender on probation or not. Next case is लघवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. इस केस में सेक्शन 3 would have no application taking into consideration the nature of the offense. However, section 4 could come to the aid of the appellants as none of the offense committed of which they were found guilty is punishable with death or imprisonment for life. Further, the court being concerned with the appellants who were under 21 years of age on the date of the offense and not on the date of the conviction, section 6 would not come to their aid. In this case, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 3 जो प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट है वो उसका कोई एप्लीकेशन नहीं हो सकता, क्योंकि जो एपिलेंट है वो अंडर 21 इयर्स ऑफ एज है. कब था वो 21 ऑफ इयर्स एज? At the date of the commission of the offense, and on the date of the conviction he was above 21 years of age. यहाँ पे सेक्शन 4 अप्लाई किया गया था बिकॉज जो ऑफेंसेस उसके ऊपर चार्जेस था, और जो ऑफेंस कमिट करने के लिए उसके ऊपर चार्जेस था वो बहुत ज्यादा सीरियस तो नहीं था, और सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट भी अप्लाई किया गया था. ओके, नेक्स्ट इज लखनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि इसमें कोर्ट ने हाईलाइट किया था डिफरेंस बिटवीन द प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट एंड सेक्शन 360 ऑफ द सीआरपीसी, नाउ 401 ऑफ बीएनएस, जिसमें जो डील करता है प्रोविजन, रिलीज ऑफ ऑफेंडर्स ऑन प्रोविजन. ओके, तो दिस केस हाईलाइटेड द डिस्टिंक्शन बिटवीन द प्रोविजन ऑफ 1958 एक्ट एंड सेक्शन 360 ऑफ CRPC. The distinction is that under the Act 19 under the Provision of Offenders Act 1958, the court
the court is required to seek report from the probationary officer before allowing the offender, and whereas under section 360 of CRPC, no such limitation is imposed upon the court. So the main difference is probation act में probationary ऑफिसर्स का रिपोर्ट बट सेक्शन 360 में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. ओके, सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट केस लॉज. आई होप आपको समझ में आया होगा और ये आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा. अगर आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय.